दुनिया एक ऐसा खतरनाक मोड़ पर खड़ी है कि हम देख रहे हैं कि बच्चे, खवातीन, चिल्ड्रन, विमेन एंड इनोसेंट पीपल आर बीइंग मैसेकर्ड। उनका कत्ल हो रहा है, कत्ल आम हो रहा है और दुनिया खड़ी देख रही है। The national symbol is Satyameva Jayate. We should stand with the truth. Okay, we should not. It's not about where we can benefit. It's standing with the truth. And in this whole thing, it is very evident, okay, that the perpetrator of genocide is Israel here, and the people of Palestine should be given justice. बेंगलुरु फॉर जस्टिस एंड पीस के ज़ेर एहतमाम 26 सितंबर को सैकड़ों अफराद ने एहतजाज में शिरकत की और मुतालबा किया कि भारत गज़ा में जारी नस्ल कुशी के पेश नज़र इसराइल से हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म कर दे। मुजाहिरीन ने इसराइल को असलहा फराहम करने वाली कंपनीज के लाइसेंस मनसूख करने, दरामदात और दिफाई और निगरानी की टेक्नोलॉजी में मुश्तरका मनसूबों को रोकने और भारतीय पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की इसराइली तरबियत को बंद करने का मुतालबा किया है। मुकर्रिरीन ने टाटा, अडानी और विप्रो जैसी भारतीय कॉरपोरेशंस पर इसराइली दिफाई कंपनियों से पार्टनरशिप जारी रखने पर भी तनकीद की और मकामी यूनिवर्सिटीज़ को भी एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर आड़े हाथों लिया, जबकि गजा का तालीमी ढांचा तबाह हो चुका है। ये मुजाहरा आलमी सतह पर जारी एहतजाजी लहर का हिस्सा था। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि इसराइल के इक़दामात गज़ा और मगरबी किनारे में बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं और ये जराइम इंसानियत के ज़ुमरे में आ सकते हैं। मुजाहिरीन ने याद दिलाया कि भारत ने हाल ही में इसराइल के साथ नई सरमायाकारी मुआहदे पर भी दस्तखत किए हैं। मुजाहिरा फ़लस्तीनी शहदा को याद करते हुए और जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के अज़्म के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ। See, everybody knows of this international issue, Palestine, and what Israel is doing. Okay, and it's been 2 years. The kind of things which Israel has done is very unfair. The world has taken notice to it. A lot of Western countries have taken notice to it. A lot has happened across the globe. Not much has happened in India. In Karnataka, for a lot of reasons unknown, we have not been given permissions to protest. However, this is one protest with permission which is happening. And what I would like to say is I was witness to a protest in London, Russell Square 3 weeks ago. The crowd which I saw was 50 times of what we are seeing here. In spite of having hundreds here, okay, we had thousands there, okay. So that awakening in the Indian population is needed. We need to care for the others. I saw a lot of concern among the Westerners for the world, which is lacking to some extent. I appreciate all the people who have come here. They have come here in hundreds, but for the size which India is, we should have been thousands of people, tens of thousands of people rallying for protests. I hope in the coming days, with permission, there will be thousands of protesters rallying for the cause of Palestine. And on the other hand, the government of Karnataka and the government of India, we want them to break all ties with Israel. Okay, it's a rogue state. They should have no kind of treaties with Israel. This is our demand. A lot of hypocrisy we are seeing in a lot of other things also in our country. We are a country which the national
national symbol is Satyameva Jayate. We should stand with the truth. Okay, we should not. It's not about where we can benefit. It's standing with the truth. And in this whole thing, it is very evident, okay, that the perpetrator of genocide is Israel here, and the people of Palestine should be given justice, and they rightfully need to exist in their own land. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುದ್ದಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶ ಸದಾಕಾಲ ಫಲಸ್ತೀನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದುರಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಈ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದೆ. ಮುಂದೆ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಏನು 2 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಆ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಜೊತೆಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಾಗ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಫಲಸ್ತೀನಿಗೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತ ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿದಾರೋ ಆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಆ ಇತಿಹಾಸನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಫಲಸ್ತೀನಿನ ಏನು ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಕೊಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿಮಾಂಡ್ ನಮ್ಮದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ. See, it's been organized by many organizations. It was very difficult to get permission. As a whole, I mean, you know, it's a milestone that we have got an opportunity to come and protest and getting permission. So people have come from all over Karnataka here. It was very short time we announced, and you can see many students, even kids are there. So every heart is paining and crying. This is in solidarity with the people of Gaza and Palestine. This is unique in history that even food aid has been stopped. Gaza people are suffering like anything. Palestine, Israel and UN should see that they reach food aid. Yeah, we are here to protest the Israeli genocide on Palestinians in Gaza. It's almost 2 years since the genocide began, and yet, there has not been any kind of cessation of hostilities and genocide in Gaza. And recently, we saw the United Nations Commission report saying that it is undoubtedly a genocide taking place, and still we have full diplomatic relations with Israel. India continues to have that, and we saw yesterday Sonia Gandhi writing an op-ed on this, condemning India's continued diplomatic relations with Israel and not doing enough to stand in solidarity with Palestine, which we have historically done as a nation. We are protesting both the central government's lack of standing and solidarity with Palestine, as well as this hypocrisy kind of the Congress party also, because on one hand we have Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi, all of them writing against the central government's support of Israel and lack of standing in solidarity with Palestine. But on the other hand, we also have a state government
ruled by the Congress party, where the state government has continued business as usual, all the business relations with Israel. There are so many defense treaties of Israel and India in Bangalore itself and in Hyderabad, and in both the states it's the Congress government which is in power. So if you are taking a principled stand supporting Palestine, you also have to take a principled stand in that you will not do business as usual with Israel, which is committing the genocide. So we expect that principled stand by the Congress party, the state government seceding and not doing any business with Israel as usual. And we want the Indian government, the union government, to also condemn Israel, to stand together with the rest of the world in condemning this genocide, in supporting the Palestine and its people, and in opposing the Zionist mass murderous genocidal regime of Israel. That is why we are protesting here in Bangalore. आज का जो प्रोटेस्ट है वो उन लोगों के लिए है, उन मजलूम लोगों के लिए जो 2 साल से अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, बल्कि 2 साल नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 70 साल से उन्होंने आज़ादी के लिए उनकी जद्दोजहद जारी है। और आज इस वक्त दुनिया एक ऐसा खतरनाक मोड़ पर खड़ी है कि हम देख रहे हैं कि बच्चे, खवातीन, चिल्ड्रन, विमेन एंड इनोसेंट पीपल आर बीइंग मैसेकर्ड, उनका कत्ल हो रहा है, कत्ल आम हो रहा है और दुनिया खड़ी देख रही है। यहाँ तक कि वो लोग, वो भूखे लोग, दोज आर एंग्री, वो जब जाते हैं खाना लेने के लिए तो उन्हें वहाँ पर कत्ल किया जा रहा है और इस बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है कि सारी दुनिया देख रही है। हालांकि आवाज़ें उठ रही हैं, अब तो यूरोप से आवाज़ें उठने लगी हैं और बहुत सारे ममालिक ने, मेनी कंट्रीज रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन, और मैं समझता हूँ कि ये उनकी जद्दोजहद बेकार नहीं जाएगी। Their sacrifice will definitely be successful। और हम देख रहे हैं इस वक्त जो हो रहा है, नेतन्याहू जो बड़ा शैतान, इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर हिटलर भी होता तो उसका खुद सिर्फ शर्म से झुक जाता जो नेतन्याहू कर रहा है उसके मुकाबले में। और अमेरिका पूरी तरह से उसका साथ दे रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर एक ऐसा हंगामा मचाए हुए हैं कि सारी दुनिया तमाशाई बनी देख रही है और बिलखुसूस वो अरब ममालिक, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक आवाज़ नहीं उठा सकते, कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ उनको अपनी पड़ी है। और इस वक्त सारी दुनिया इस बात में शर्मिंदा है कि हो क्या रहा है। हम तस्वीर नहीं कर सकते किस तरह बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, किस तरह ख़वातीन को कत्ल किया जा रहा है और बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं उन्हें, और इस तरह का स्टारवेशन के साथ ये कभी मैं समझता हूँ कि इंसानियत कहाँ चली गई। मैं समझता हूँ कि इंसानियत का फिर इंसानियत को ह्यूमैनिटी हैज़ टू बी रीडिफाइंड, इस तरह से शर्मिंदा कर दिया है कि फिर दोबारा से मैं समझता हूँ कि उसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या रहा है। तो ऐसे वक्त में जो लोग यहाँ जमा हुए हैं, मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी जमात है लेकिन एहतजाज के नाम पर आज यहाँ खड़े हैं। यह मैसेज सारी दुनिया तक पहुँचना चाहिए कि यहाँ पर जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलेगी वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह विल कम आउट सक्सेसफुल और उनका ख्वाब तरह शर्मिंदा ताबीर होगा। हज़ारों कुर्बानियाँ दे चुके हैं और चंद हज़ार कुर्बानियाँ शायद दरकार हैं, लेकिन इंशाअल्लाह उनकी जद्दोजहद में ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। इसलिए हम कुछ तो नहीं कर सकते, इसलिए सोचा कि कम से कम ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल होकर हम भी अपना नाम प्रोटेस्ट में एहतजाज करने वालों में लिखा लें। बस इसलिए हम हाजिर हुए हैं। अल्लाह करे कि I'm here because I belong to a country that is dealing with people who commit genocide and people who commit occupation. It would be wrong to say Israel as a country or a state because there is no actual proof of that. But
but there is proof that Palestinians have been on a patch of land for many, many decades now, and there is violence happening there, and there is violence on women and poor people and on the environment, and babies are dying. And I don't support a nation that supports another entity that kills babies. So what is your message to the Indian government or the UN nation from this protest? That if you believe in the ideals of Gandhiji, which means non-violence, you need to come back from this deal. You need to cut your ties with this thing called Israel, and you need to stop arming them and letting them arm us, because this is not the country I envision for us. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇವತ್ತು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ನರಮೇಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ನರಮೇಧ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಥರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದನೇ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆರ್ಮ್ಸು ಸಹ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಆ ನರಮೇಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ, ಎರಡನೇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಹ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಒಂಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಇನ್ನೊಂಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಹ. ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಸ್ರೇಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕೇನಾದ್ರು, ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ನರಮೇಧ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಲ್ಬಾರ್ದು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We are here to protest on behalf of the world, basically, to stand with Palestine, to stand with all other oppressed people, mostly with Palestine today, with Gaza, and we are here.